हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं कोलालमपुर के बर्ड पार्क में। दिस कोलालमपुर बर्ड पार्क इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री फ्लाई एवरी, जिसका मतलब है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जिस केज है और जहाँ पर परिंदे इजीली फ्लाई करते हैं और अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बर्ड पार्क दुनिया के कुछ चंद जो बर्ड पार्क्स हैं जो फुली कवर्ड हैं उनमें से एक है। ये टोटली कंसिस्ट है 60 हेक्टर मींस 150 एकर्स लैंड पे कंसिस्ट है। यहाँ पर बर्ड्स आपको डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट ओरिजिन, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, तंजानिया और ईस्ट एशिया, डिफरेंट रीजन से आपको यहाँ बर्ड मिलेंगे। और इनकी टोटल स्पीशीज़ हैं 200 और नंबर ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पर 3000, मे बी दे इंक्रीज देयर मोर। इस पार्क में आपको बर्ड फ्री फ्लाई करते हुए नजर आएंगे, जो कि एक यूनिक एहसास है। और इट वाज सो अमेजिंग व्हेन यू लुकिंग द बिग बर्ड्स आर जस्ट फ्लाइंग नेक्स्ट टू यू। There's a small cafeteria in the bird park where you can sit, take a rest, drink some water, hydrate yourself, and you can move on. And the birds will be next to you. That is so amazing experience that you are having the water, drinks, and tea, and eating something next to the birds. ये बर्ड पार्क के सिटी सेंटर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है और यहाँ पर बहुत सारे एक्सोटिक और ब्यूटीफुल काइंड ऑफ आपको बर्ड्स मिलेंगे, जो कि अराउंड द वर्ल्ड आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते। One of my favorite place was हंटर बूथ। हंटर बूथ में डिफरेंट काइंड ऑफ आउल्स हैं जो कि इंपोर्ट किए गए हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से। इसके साथ ही एक ईगल भी है जो कि मलेशियन ईगल है फ्रॉम लंकावी। ओके, सो दीज आर द हंटर बूथ और all the owls and the eagles and different type of owls हैं जो कि एक ज़बरदस्त और they are beautiful in the nature and looks beautiful as well. You will also find the fresh water birds जो कि साफ़ पानी के साथ रहना पसंद करते हैं। और अलॉन्ग द वे देयर अ वाटर की एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, तो वो आपको वहीं पे उसके साथ ही नज़र आएंगे।
इस बर्ड पार्क को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है और इसके अलावा डिफरेंट जोन्स भी हैं। सो पहले जोन में आपको पीकॉक और अदर बर्ड्स मिलेंगे जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। जोन 2 में आपको फ्रेश वाटर या स्ट्रीम फ्लोइंग के साथ जो ले बर्ड्स रहते हैं वो आपको मिलेंगे। जोन 3 में आपको हॉर्नबिल, टूकैन और दिस काइंड ऑफ बर्ड्स मिलेंगे जो कि अबव द सरफेस रहना पसंद करते हैं, मींस दे वांट टू स्टे ऑन द वेरी टॉल ट्रीज़। और हम जोन 4 जो कि अभी हम राइट नाउ देख रहे हैं, ये आपको द हेवन ऑफ पैरट्स है। यहाँ पर बिगेस्ट केज या बिगेस्ट एवरी है जो कि फ्लाइंग पैरट्स की है और बिग नंबर ऑफ पैरट्स आर अवेलेबल हेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज़ वाटरफॉल आइवरी। ये एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल यहाँ बनाई गई है इन बर्ड्स के लिए जो कि पानी में रहना पसंद करते हैं या अपना फूड पानी में से लेते हैं। In this bird park, there is a school for the birds, and that is for meant to be let the audience or visitors know that how they breed the birds, how the birds, the life cycle, and how the birds are growing up, and what region and what's the bird speciality. So with that, there is an educational thing, and there is a educational for how the bird grow in an incubator artificially. So they have all this knowledge and education for their visitors and for the viewers. Birds will visit you while you are eating in cafeteria, so that you have to share your food with them and enjoy their presence. They are just next to you. You will find the one of the world's biggest bird, ostrich, in the park.
So there are two type of ostrich there you can see in the park. At the end of this video, this is the bird show that is happening 2 times a day. This bird show is full of fun, a lot of education, beautiful presentation, and the birds are just amazing. So whenever you're visiting them, please do check them out, and they are very, very professional, and we will enjoy that. Right, all right, stand. And thank you so much to Parrot. Very good job. Right, everyone, please remain seated. Okay, and do not raise your hand. And last year, mission what? Call Paki down. Okay. Okay, and you ready? Let's calm down here. Alright, thank you so much to Paki. A nice performance. Okay, come all my friends. Okay, we have come to the end of our show, but before I end, let me introduce our key trainers for today. Now on my right side is Mr. Mo with Q. Yay! On my left side is Mr. Raham with Paki. And once again, my name is Mr. La. Thank you for coming to Canada Park. Bye! Thank you, bye! Alright, now last word from Q. Bye-bye. Right hand. I like. When you do anything else? Thank you everyone. इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली से शेयर कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय। Okay, there's a lot of birds with me.